Hello friends, welcome to EasyApply. I'm going to tell you about a job opening from ServiceNow. ServiceNow is looking for a software QA engineer, and if you are want to apply for this job, you have to click on this section. I'm interested, and apply link will be active, and I will put the apply link in the description box. There can you find the link very easily. I'm going to tell you about some job description, what you get to in this role: maintaining exciting automation test framework, collect and report quality matrices from test execution, work with developers to design specific testing strategy for feature being developed and automated them, create comprehensive test plan, execute and automate them, support engineering organization in troubleshooting और addressing issue with application and dev test environment. क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है 0+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विथ टेक्नोलॉजी रिलेवेंट टू एन कोडिंग स्किल विथ हाई क्वालिटी रिजल्ट, एक्सपीरियंस वर्किंग विद in different automated testing framework including Java, JUnit, Selenium, TestNG and other open source projects, experience with the Agile methodology for software development teams, ability to understand several testing techniques, easy performance unit integration, automated their strength and weakness and ability to use them to best effect including tracking and addressing of any discovered issue, ability to use tools such as IDE, debugger, build tool, source control, ServiceNow instance profiles, system administrative, Unix tools to assist with daily task. I will put the apply link into the description box. There can you find very easily and apply. And बात करते हैं हम अगली जॉब की. तो अगला जो जॉब है वो है इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की. तो वेरिजोन कंपनी इज़ लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मधुपुर इंडिया will be the job location for you. And when you join the Verizon, you can easily understand what they want to say to you and the message for the freshers and the message for new joiner. And अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की. You will need to have bachelor degree or 1 or more year of work experience, knowledge of any programming language like Java, Python, etc., knowledge of algorithm, even better if you have a degree, good communication and presentation skill, ability to understand business requirement and take it to code implementation, strong analytical debugging skill. If Verizon and this role sound like a fit for you, you encourage have to apply even if you don't meet every even better qualification listed above. मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं तो इनमें से कुछ चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. वेरिजोन आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, बट जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा. तो फिर से मैं ये कहता हूँ, हर बार जो कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें. कुछ चीज़ें जो होती शुरू में नहीं पता चलती एंड तक जाती हैं, तो कुछ गलती करने से पहले आप उसको जान लें. और हर जॉब को जितना पहले आप अप्लाई करेंगे ना उतना प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, क्योंकि जॉब जितना पहले करेंगे उतने पहले आपके पास असेसमेंट आएंगे और जितना जल्दी हायरिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है. और ज़्यादा अगर लेट होता है तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी वीडियो देखें, आप एंड तक देखें, सारी जानकारियाँ लेने के बाद फॉर्म को अप्लाई करें. एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो बी अप्लाई. एंड stay connected with us by subscribing EasyApply to get regular update from new job opening from every companies like MNC and others. You will find the new job opening updates regularly basis, daily by daily. Okay, thanks for watching this video and stay connected, stay safe. Thank you.